Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 8. This is your English grammar book and the name of your book is English Grammar plus Skills Unleashed Workbook. We are going to do chapter number 6 of your book and the name of the chapter is Pronouns. Yes, what are pronouns? Pronouns are those words which we use in the place of noun. So here we can see it's written here that a pronoun is a word used in a place of a noun. Now look at these sentences. Abhi is very hardworking boy. He is good in studies as well as in sports. His brother admires him. Both of them would like to follow his father's footsteps. Here the word he, him and his take the place of Abhi, while them is used instead of two brothers. So आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ sentences लिखे गए हैं about अभी के बारे में. So अभी जो बहुत ही hard working boy है and he is good at studies. वो studies में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. As well as in sports और sports में भी अच्छा है. His brother admires him. अब उसके ब्रदर की बात हो रही है कि उसका जो ब्रदर है वो किसे एडमायर करता है, अपने भाई अभी को. तो अभी के लिए हमने यहाँ पे हिम लिखा है. Both of them would like to follow his father's footsteps. तो यहाँ पे them कौन है? अभी और उसके ब्रदर की बात हो रही है. तो दोनों बच्चे जो है अपने फादर के फुटस्टेप को फॉलो करेंगे. Now here the words he, him, his take the place of अभी और while them is used for the two brothers. The noun which is replaced by a pronoun is called the antecedent. So वो noun जो pronoun की वो noun which is replaced by noun, जिसको pronoun replace कर देता है, ऐसे noun को हम antecedent कहते हैं. Now let's learn about the kinds of pronoun. There are 8 kinds of pronoun. Personal pronoun, possessive. Personal में क्या क्या है जो हम अपने लिए यूज करते हैं? I, we, you, he, she, it, they. Possessive है mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Demonstrative में this, that, these, those. Interrogative में who, whom, which, what. Reflexive myself, herself, himself, yourself, yourselves, themselves. Reciprocal में each other या फिर one another. Indefinite में each, every, somebody, someone, either, none या nobody. Relative में which, who, whom, whose, of, which. So ये सारे pronoun हम use करते हैं. There are 8 kinds of pronoun. So first is the personal pronoun. Personal pronoun क्या होता है? जो हम अपने लिए यूज करते हैं, खुद के लिए यूज करते हैं. The following table shows the breakup of personal pronouns with respect of case, person, number या फिर gender. So इन सब को हमें जो ध्यान में रखना है and इसके according we have to decide the personal pronoun. So here in the first column we can see first person, second person and third person लिखा हुआ है. अब इसमें subject क्या है? मेल, फीमेल या फिर न्यूट्रल. तो मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी या न्यूट्रल के लिए इट. अब इन तीनों के लिए हम आई और यू भी यूज कर सकते हैं इन द फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. जो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम प्लेस करते हैं उसमें हम आई के जगह पे हम मी यूज कर सकते हैं और यू की जगह यू ही यूज होता है. ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर एंड इट को इट ही रहने देना है. नेक्स्ट इज पॉजिटिव प्रोनाउन. इसमें भी आई, मी हमने तो यूज किया था, लेकिन जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम माइन लिखेंगे. यू बन जाता है योर्स एंड हिज, हिम की जगह पे हमने यहाँ पे हिज लिख दिया है फॉर ही के लिए, शी के लिए हर्ट्स एंड इट के लिए इट्स. सो यहाँ पे 3 कैटेगरीज लिखी गई हैं कैसे हमें पर्सनल प्रोनाउन को लिखना है. सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखना है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लेना है या पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह पे लिखना है. नेक्स्ट इज प्लूरल. अब हम प्लूरल की बात करेंगे. सो प्लूरल में है वी, यू और दे. अब वी बन जाता है अस इन ऑब्जेक्टिव और आर्स बन जाता है पॉजिटिव में. यू जो है यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव में और पॉजिटिव में योर्स हो जाता है. दे बन जाता है देम इन ऑब्जेक्टिव एंड देयर्स इन पॉजिटिव. सो चिल्ड्रन यू हैव टू लर्न दिस टेबल व्हाट वाज गिवन हियर. यू हैव टू लर्न दैट. नाउ द फर्स्ट in personal pronoun में is the case and personal pronoun. Case और personal pronoun पढ़ेंगे. Always use the nominative case pronoun if the pronoun is in the
पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट. सो हमें क्या करना है, हमेशा नॉमिनेटिव केस यूज करना है प्रोनाउन का. अगर जो है इफ द प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, अगर जो प्रोनाउन जो है एक पार्ट है सब्जेक्ट का. फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर एंड मी वेंट टू द मूवी. सो यहाँ पे मी नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह हम यूज करेंगे आई. सो माई सिस्टर एंड आई वेंट टू द मूवी. Next is always use the objective case pronoun if the pronoun is the part of the object. So जब object part में है तो हमें objective pronoun use करना है. My sister took a picture of him and I. अब I की जगह यहाँ क्या use करेंगे, me. My sister took a picture of him and me. Now personal pronouns are also called personal because they indicate a person speaking, या spoken to or spoken about. Personal pronoun refers to the specific individual or a group. So personal pronoun किसी particular individual के बारे में बात करता है या फिर किसी group के बारे में बात करता है. So here the example is given. I saw you when she talked to them. मैंने तुम्हें देखा जब तुम उससे बात कर रहे थे. In the above sentence the pronoun I refers to the person speaking. अब जो ऊपर है इसमें I का मतलब वो person है जिसकी बात हो रही है. The pronoun you refer to the person spoken to. यहाँ पे जो pronoun you है वो किसकी बात कर रहा है, उस person की जिसके बारे में बात हो रही है. And the pronoun she and them refers to person spoken about. अब यहाँ पे she और them का क्या मतलब है, इसकी बात हो रही है. यहाँ पे she और them का मतलब है वो person जिसकी बात हो रही है. Now next is number and personal pronoun. The number shows whether the pronoun refers to a single person or a thing or more than a person or thing. So number और person pronoun का ये combination है कि ये बताता है कितने लोग हैं, कितने person हैं जिनकी बात हो रही है. It tells what verb we have to use, singular or plural. तो number बताता है कि कौन सा verb use करना है, singular verb use करना है या फिर plural verb use करना है. He is late using singular form of the verb be. अब जो है he है इसलिए हमने जो है is लगाया है इसके साथ. We are late, यहाँ पे हमने plural form यूज किया है क्योंकि यहाँ पे we है तो हमने लिख दिया है are. Now remember that the pronoun you, whether it is singular or plural, always take a plural form of the verb be. So भले ही pronoun singular हो या फिर plural हो, in the case of you हमें क्या करना है, हमें जो है be form लेना है, plural form लेना है you के साथ. So you are late या फिर you were late. Now let's come to the gender point, gender and personal pronoun. Some of the personal pronouns have gender, which means that they are masculine, feminine or neuter. So कई सारे personal pronoun ऐसे होते हैं जिससे हमें जो है किसी भी noun का gender पता चलता है. Knowing the gender of an antecedent, we can choose the pronoun which matching gender. So जो भी हमें जेंडर है उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्रोनाउन चूज कर सकते हैं. सुमित एक लड़का है तो हमने इसके साथ लिखा है ब्रदर एंड आई लाइक हिम. अब जो है मुझे पता है कि सुमित इज अ बॉय एंड सुमित के लिए हमने यहाँ पे हिम यूज किया है एज अ जेंडर. नेक्स्ट इज दिस इज समिता. समिता एक गर्ल है, शी इज अ डांसर. दिस इज माई पेन. अब पेन है एक न्यूट्रल जेंडर तो हमने यहाँ पे लिखा है गिव इट टू मी. Now children, here we have to complete the exercise. Use personal pronoun to complete these sentences. One pronoun can be used more than once. So एक pronoun को एक से ज़्यादा बार हम use कर सकते हैं. My sister Anu loves food. मेरी sister अनु को food पसंद है. The burger is for. अब अनु को पसंद है इसलिए ये जो blank है वो burger किसके लिए है, अनु के लिए. तो हमने अनु का हम जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जो जगह थी वहां से लिखेंगे दिस बर्गर इज फॉर हर. द स्टूडेंट्स लव द डॉक्यूमेंट्री ऑफ एनिमल्स. द डॉक्यूमेंट्री इज फॉर देम. अब यहाँ बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देम. सो चिल्ड्रन, लाइक वी हैव डन द टू ऑफ द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर होमवर्क, यू हैव टू डू ऑन योर ओन. नाउ नेक्स्ट कम्स द पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन किसी के बिलोंगिंग के बारे में बताता है कि कोई भी चीज किसकी है. सो फॉर इन दैट केस वी यूज दीज वर्ड्स गिवन हियर, माइन, योर्स, हर्स, हिज, आर्स, इट्स एंड देयर्स. एग्जाम्पल इज दिस पेन इज माइन.
Here the possessive pronoun mine functions as subject complement. So यहाँ पे जो possessive pronoun है subject complement का काम कर रहा है, mine word जो है subject complement का काम कर रहा है. So this book is yours as subject complement. His cap is on the table as subject. It is the favorite film of theirs, object of the preposition. And we won't waste time, so you don't waste ours. Here also object verb is used. Now fill in the blanks with suitable pronoun. Possessive pronoun हमें यहाँ पे fill करना है. That umbrella is hers. वो जो umbrella है वो उसका है. This is mine. You can write here mine. Are these books? अब क्या ये books हम किसी से पूछ रहे हैं कि are these books? यहाँ क्या लिखेंगे? Yours. क्या ये book तुम्हारी है? So children, we have done the two of the questions. Rest are your homework. Now the next is demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun points out and identifies a noun or pronoun. This and these refer to things that are nearby, either in space or time. So demonstrative pronoun क्या बताता है? ये pronoun बताते हैं किसी भी चीज की तरफ की कोई भी चीज कहाँ पे है. It talks about the place. Demonstrate कर रहे हैं means किसी को इशारा करके बता रहे हैं कि ये चीज कहाँ पे है. So whenever we use जब हम किसी को इशारा करके बताते हैं कोई चीज तो हम क्या यूज करते हैं? This, that, these और those का यूज करते हैं. So यहाँ पे हमने this, as you know, this is used for one thing and that is nearby. That हम यूज करते हैं जब एक चीज हो वो दूर हो. ऐसे these मतलब बहुत सारी चीजें जो मेरे पास हैं और those मतलब बहुत सारी चीजें जो मुझसे दूर हैं. So these are a few kind of demonstrative pronouns and the example is given here. This is the book I want and that is the pen he bought. In the above example, this is used as a subject and refers something that is close to the speaker. That is also a subject but refers to something that is far away from the speaker. So this and that can be used as object. I want this, he wanted that. These and those are used to refer the plural noun. These, those हम plural noun के लिए use करते हैं. They can also function as subject and object. तो ये भी subject और object की तरह ही function करते हैं. These are my books. तो यहाँ पे these क्या है? Subject का काम करेंगे. Those are his pencils. यहाँ पे भी those subject का काम कर रहे हैं. I want these, she want those. अब यहाँ पे these और those क्या है? Object के place पे रह के object का काम कर रहे हैं. So here children we have to fill in the blanks with the demonstrative pronouns. I like these dresses more than. अब ये जो मेरे पास है इसे तो मैंने कह दिया these. अब इसका just opposite बोलेंगे those. So I like these dresses more than those on the top shelf. Give me one of these. इनमें से एक दे दो मुझे. So here also we have to write these. Rest are your homework. Next is interrogative pronoun. Interrogative pronoun क्या होते हैं? These pronoun ask questions. So WH वाले जो भी words हैं वो हमारे interrogative pronouns में आते हैं. Who, whom, which are used to refer to people. And which and what are used to refer for things and animals. So these are some interrogative pronouns. Who acts as a verb, whom acts as the object of the verb, preposition, etc. So here the examples are given here. Which is your house? यहाँ पे which क्या काम कर रहा है? Subject का काम कर रहा है. Who wanted to go? Again here who is acting as subject. Whom do you want to invite? तो अब invite क्या काम कर रहा है? Object का work कर रहा है. To whom do you want to whom do you wish to speak? Here object of the preposition is to. What did she say? Direct of the object of the verb say is used. Whosoever said that is a lie. It's working as a subject. You can marry whosoever you like. Again object and which, take whichever hat you want. Again here the verb is the pronoun is acting as an object. You can eat whatever you like. Here also object is used. So now children you have to complete the blanks with the interrogative pronouns. So dash is the name of that teacher.
सो अब हम किसी का नेम पूछ रहे हैं तो हम लिखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द टीचर. सो चिल्ड्रन, द सेकंड क्वेश्चन इज डिड यू लूज योर पर्स. सो व्हाट यू हैव टू fill here, how did you lose your purse. So children, we have done 2 of the questions. Rest are your homework, you have to do on your own. The next pronoun that we are going to learn is reflexive or emphatic pronoun. So the reflexive pronoun have the same form as the emphatic or intensive pronoun. So दोनों का जो form है वो एक जैसा ही है. They indicate that the subject and the sentence also receives the action of the verb. So ये indicate करते हैं कि जो subject है sentence का ये जो है action को same receive करता है. The reflexive pronoun reflects the subject of the sentence. Reflexive pronoun क्या करता है? Reflect करता है subject को किसी भी sentence. So here the example is she enjoys herself fully and they will hurt themselves. आप देख सकते हो here we have used the reflexive pronoun. Now the sentence please give that book to myself would be incorrect. अगर हम ये लिखते हैं कि please give that book to myself, would be incorrect. This is because there is no I in the sentence for myself. So reflexive pronoun का main काम होता है pronoun को reflex करना, उसका reflection type आप कह सकते हो दिखाना. So अगर यहाँ पे I रहता तो ही हम उसको reflex करके myself कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे she को हमने herself कर दिया and they को themselves कर दिया. When several pronouns are used in a sentence, जब एक sentence में बहुत से pronoun use होते हैं, the reflexive will take either first person or second person. So reflexive जो है या तो first person को reflex करेगा या फिर second person को reflex करेगा. For example, Ram, Sham and I will come ourselves. So अब यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है, राम की, श्याम की और I की. So यहाँ पे इन तीनों को मिला के क्या बनता है R. So क्या हमने यहाँ पे कौन सा reflexive pronoun यूज किया है? ourselves. You and Mohan should come yourselves. So अब यहाँ जो है you and Mohan means 2 लोगों की बात हो रही है जिसे हम you कहते हैं, तो इनके लिए हमने yourself लिखा है. So in the first one, first person को reflex कर रहा है and in the second one, second person को reflex कर रहा है pronoun. Now let's learn about the emphatic pronoun and it emphasizes on a pronoun or a noun. So emphatic pronoun जो है एक noun या फिर pronoun पे ही emphasize करते हैं. For example, she herself decided to go. उसने खुद से decide किया, तो she के बाद एकदम से herself आ गया. He himself is to be blamed. I myself will do all this and you yourself are guilty. Now here children, we have to change the following reflexive pronoun into emphatic pronoun. So reflexive pronoun में दिया गया I के लिए myself लिखा गया है. अभी हमें क्या करना है, हमें इसे reflexive pronoun को emphatic में change करना है. So I myself will do it. So this is the answer that we are going to write. And she can go there herself. She herself can go there. So ऐसे you have to complete the rest of the exercise. Now be careful not to use reflexive pronoun when they do not belong. Sumit and myself are going to the magic show. This is wrong. Sumit and I are going to the magic show. So यहाँ पे हम myself use नहीं करेंगे, हम क्या use करेंगे? I. Yourself and I could do the project together. You and I could do the project together. So again, the first one is wrong and the second one is correct. So this you have to keep in mind. Next, sixth one is reciprocal pronoun. Reciprocal का मतलब आपने पढ़ा होगा in your maths also. Reciprocal का means किसी चीज का उल्टा. So the reciprocal pronouns are each other and one another. So each other और one another दो reciprocal pronoun यहाँ पे दिए गए हैं. Each other is more frequently used than one another. So हम ज़्यादातर each other को use करते हैं. But when more than 2 people or things are involved, one another often preferred. So जब एक से ज़्यादा की बात होती है तो हम one another word को ज़्यादा use करते हैं. Now we can bring 2 sentences together by using our reciprocal pronoun. 2 sentences को एक साथ जोड़ सकते हैं. कैसे? By using this reciprocal pronoun. So here children, you can see the example is given. Ram likes Sita, Sita likes Ram.
सो दो सेंटेंस है और दोनों आप देख सकते हैं एक दूसरे तरह से तो राम लाइक सीता और दूसरा सेंटेंस है वो कह रहा है सीता लाइक्स राम। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो क्या बनेगा सेंटेंस? राम एंड सीता लाइक ईच अदर। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द थ्री बॉयज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब आप देख सकते हो कि ईच अदर यहाँ पे यूज किया गया है बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पीपल। नाउ ऑल द थ्री बॉयज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब सारे बॉयज की बात हो रही है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने वन अनदर यूज किया। दे हेल्प वन अनदर व्हेन दे कैन। सो अब हियर आल्सो यू कैन सी दे की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे वन अनदर यूज किया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगुलर वी यूज ईच अदर। जब हम ज्यादा की बात करते हैं वी यूज वन अनदर। नाउ हियर few questions are given children. Let's read that. Underline the reciprocal pronoun in the following sentence. सेंटेंस में हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन को सिर्फ अंडरलाइन करना है। वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग द हॉलिडेज। तो यहाँ पे हमें पता है ईच अदर को अंडरलाइन करना है। नाउ द स्टूडेंट्स कांग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीचेस। सो अब यहाँ पे हमने वन अनदर को अंडरलाइन किया है। So like we have done the two of the questions children, these all are to be done by yourself. You have to do it. Next is indefinite pronoun. So what is indefinite pronoun? The indefinite pronouns do not refer to any specific person. ये किसी एक particular person के बारे में बात नहीं करते हैं। The most common indefinite pronouns are all, another, any, anybody, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody or some. So here children some examples are given. ये जो words यहाँ लिखे इन्हें हमने use करके कुछ examples बनाए हैं. Let's read them. All are equal in the eyes of God. She doesn't like this doll. Let her choose another. You can keep any you like. Anybody can meet him. Anyone can do that course. Anything will be done for the present. Each had an apple in hand. Everybody attended the meeting. Everyone was present there. I examined everything. Few liked his behavior. So these are a few of examples. Now children, here you have to encircle the correct indefinite pronoun. यहाँ पे हमें correct indefinite pronoun को circle करना है. It's written in bold. Bold में लिखा हुआ है. Don't blame yourself. अपने आप को blame मत करो. For the confusion. Anybody is perfect or nobody is perfect. What is correct? Yes, nobody is perfect. So this is to be written. Now the next one is there is anything in my tea, something in my tea. So children, here we have to circle something. So there is something in my tea. So like this children, you have to complete the rest of the questions. Now the next pronoun that we are going to learn is relative pronoun. जिसमें हम किसी चीज को relate कर सकते हैं. A relative pronoun is used to join one phrase or clause to another phrase or clause. Relative pronoun क्या काम आता है? ये join करता है एक phrase को दूसरे clause से या एक clause को दूसरे phrase से. Some of the relative pronouns are who, whom, that, which, whose, etc. We use the relative pronoun who to refer to the subject of a sentence. So हम relative pronoun who को use करते हैं. कब use करते हैं? जब हम किसी subject को refer करते हैं किसी भी एक sentence में. Whom is used as object of a verb, preposition or etc. So whom को कब use करते हैं? जब हम object की बात करें किसी भी verb या फिर preposition के लिए. The boy who is wearing the red shirt is my brother and the boy whom you met is my brother. So अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने who use किया है in the first sentence and whom use किया है second sentence में. Next, the best decision that I can take is to go at home. And this is the book which I bought. Yeah, that I bought. Now here who is used for persons and which is used for thing. Who जो हम person के लिए use करते हैं, which use करते हैं thing के लिए. That can be used both with person and thing. That को हम person और thing दोनों के साथ use कर सकते हैं. Now children, you have to complete this exercise.
there are some errors in the use of relative pronouns in the following sentences. Correct the errors. So, she is the girl that was selected to play the protagonist role. So, here you have to identify the error and then complete the exercise. So, children, this is your homework. You have to do on your own. Now, the next exercise is let's do more. Join each of these set of sentences with a relative pronoun. So relative pronouns हमें इन दोनों sentences को जोड़ना है. One has been done for you. So Mr. Ray is an architect and he designs. His designs have won many awards. So अब हमने इन दोनों को join किया with a relative pronoun. So Mr. Ray is an architect whose designs have won many awards. So like this, children, you have to complete the rest of the questions given here. Now the next exercise is, in this you have to use appropriate pronoun to fill in the blanks with the sentences below. Tracy is in the hospital. Somebody told me that dash is quite ill. अब यहाँ पे Tracy hospital में है, तो अब आगे जो sentence लिखा हुआ है somebody told me that dash is quite ill. बीमार, ill means बीमार है. तो कौन बीमार है? जो हॉस्पिटल में है. So we can, for Tracy we can use here the pronoun somebody told me that she is quite unwell or she is quite ill. So in the first one we are going to write she. Now I went to buy my new books but dash were all sold. पर अब यहाँ books की बात हो रही, book की बात हम कर रहे हैं कि book जब बिक गई, so they were all sold out. So children, like this you have to complete the rest of the questions here. Now the next exercise is K exercise, and here we have to correct the error related to pronoun in the following sentences. So this is my own car की जगह आप लिखेंगे this is my own car. Next, every one of these boys was awarded. Every one of these two boys were awarded. So children, like this complete the rest of the work. So with this we have completed the chapter pronouns, and I hope that you have understood what are pronouns and what are their kinds and how to use them. So with this we come to the end of our video, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay good.